Here are 10 pointers to score full credit in invitation writing. Welcome back, everyone. Today, in this Smart Study session, we will go through the checklist for invitation writing. So, in the previous video, I showed you the checklist for notice writing. In this video, we are covering invitation writing because this is also a question of creative writing that is very scoring. Now, before we move on to the checklist, there's an announcement. Edu CBSE has collaborated with English Core Connect for study notes. So, if you want study notes on chapters and poems and even creative writing, so then you can go to Payhip and buy these study notes. For example, the study notes of My Mother at 66 are available on Payhip. This is the index you can go through that what all is included in it, because in YouTube videos, like in my YouTube video where I have explained My Mother at 66, there are question answers, there are extracts, there are literary devices, but I cannot include all the question answers because otherwise वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा. सो इसलिए दी स्टडी नोट्स दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और इसमें हर तरह का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है. प्रीवियस 5 years बोर्ड क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQs भी हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग. एंड साइड बाय साइड वी विल कीप ऑन एडिंग the study notes of every chapter. We haven't added yet for all chapters, but we are going to add it before your final exams. Now, if you haven't watched the previous video in which I have given the checklist for notice writing, then you can go and watch. ये जो video है ये YouTube Shorts में है. So this is the checklist of notice writing. Now let's move on to the checklist for school invitation. So आज मैंने लिया है school invitation card form. So this is the checklist जिसमें कि 10 points हैं. Why I have taken 10 points? ताकि हमें याद रहे, because invitation जो word है इसमें 10 letters हैं. So इसके 10 letters से I have taken 10 points ताकि हमें ये ना भूल जाए कि कौन सी checklist में कितने points हैं. So notice जो है उसकी checklist में 6 points मैंने लिए हैं because notice word में 6 letters आते हैं. उसी तरह invitation word में 10 letters आते हैं. So I have taken 10 points. So quickly we will go through these 10 points. So सबसे पहले ऊपर कार्ड में आता है host, उसके बाद आती है invite line. After the invite line, we write the occasion. After occasion comes the date, then comes time and venue. After venue, we write the chief guest. School invitation में chief guest आता है. Then RSVP left side पे लिखते हैं. नोट जो है वो ऑप्शनल है, अगर हमने कोई ड्रेस कोड देना है या कोई टाइम देना है सीटिंग का, सो वो नोट में आता है, वो ऑप्शनल है, वो राइट साइड पे आता है. एंड आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज दैट यू हैव टू मेक अ बॉक्स. So now I will show you how you can use this checklist through an example. So let's see one example. Now here, this is an example invitation card in which few points are missing. So we will count the number of the points and we'll see that how we can utilize this checklist. So एक तरफ इस तरह से 1 से लेके 10 तक हम नंबर लिख लिया. अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे. So नंबर 1 होता है होस्ट. सो होस्ट का नाम है, स्कूल का नाम है, सो नंबर 1 is there. After that comes the invite line. Request the pleasure of your benign presence. So number 2 is also there. Number 3 is also there. Number 4 date और time. उसके बाद venue is missing. फिर चीफ गेस्ट इज मिसिंग. RSVP 8th नंबर पे होता है, तो इतना हम याद रखेंगे कि RSVP 8th नंबर पे है. उसके बाद राइट हैंड साइड पे नोट आना है और फिर आउटर बॉक्स आना है. सो नोट जो है वो ऑप्शनल है, तो इसलिए अगर नहीं भी लिखा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आउटर बॉक्स भी नहीं है. सो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे चेक लिस्ट बनाई है, सो लाइक आई हैव सीन दैट नंबर 1 इज देयर, वी कैन पुट अ टिक मार्क देयर. नंबर 2, the line of the invite, that is also there. Request the pleasure of your benign presence on the occasion of the now occasion. So third point, that is also there. 7th annual function of the school, वो third में आ गया. उसके बाद आता है डेट, वो है हमारे पास. टाइम वो भी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वेन्यू नहीं है, सो है वेन्यू इज मिसिंग. फिर उसके बाद चीफ गेस्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं वी, वेन्यू इज मिसिंग. सी, चीफ गेस्ट इज मिसिंग. 8th नंबर RSVP है, सो दैट इज देयर. 9th नंबर पे आता है नोट, वो ऑप्शनल है, अगर हम नहीं भी लिखना चाहते तो कोई बात नहीं. और उसके बाद फिर बॉक्स जो है वो भी मिसिंग है. सो लाइक दिस वी कैन यूटिलाइज
चेकलिस्ट इन योर एग्जाम्स और हमारा पूरे के पूरा क्रेडिट जो है हमें मिलेगा. नाउ लेट्स सी द कंप्लीटेड वर्जन. हियर वी हैव द कंप्लीटेड वर्जन. The principal, staff, and students of Paradise Public School, Green Valley, East Road, Goa. This will be given in the question. Request the pleasure of your benign presence on the occasion of the 7th annual function of the school. So here comes the date, time, and venue. And here the chief guest, Shri Harkirat Singh Bajwa, IAS, ex-MLA, has kindly consented to be the chief guest. RSVP was already there. Note, kindly be seated by 4:45 p.m. and the outer box. So this will give you full credit. No marks will be deducted if you will write the invitation like this. So I hope it is very clear to all of you. Now I will bring checklist for other questions also. So stay tuned, and if you want comprehensive notes, go to Payhip and buy the notes from there. Link is given in the pinned comment also and in the description box also. So happy learning. Bye for now.